अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं jkbose फाउंडेशन क्लासेस और मैं हूं ताहिर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके क्लास 10th चैप्टर जो कि हम इंग्लिश सीरीज चला रहे हैं, तो उसका जो पोम नंबर 5 है उसके क्वेश्चन एंड आंसर, यानी कि स्नो ड्रॉप पोम के क्वेश्चन एंड आंसर्स। हमारे जो मॉडल पेपर्स हैं वो रेडी हैं और बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि संडे के दिन हम शाम को 2 मॉडल पेपर्स कम से कम आप तक पहुंचा देंगे और देखते हैं बाकी मॉडल पेपर्स भी आने वाले वीक के अंदर अंदर आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। और हम एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं कि इंशाल्लाह वो आपको बराबर क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में पूछे जाएं। तो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो पे, लेकिन इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। हमने ये सारे वीडियोस एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनाए हैं, तो आपको इंग्लिश में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो या कोई भी सिचुएशन हो तो आप इन वीडियोस को बड़ी आराम से देख सकते हैं। So let's get started in today's topic, and I must recommend each and everyone to please subscribe our YouTube channel and do press the bell icon, because when we are actually updating any new video, so you will get the notification on time. So let's get started. In today's class we are actually going to revise and basically going to learn about the question and answers of your poem The Snowdrops. The first thing that I'm going to discuss is basically the poetic devices in the poem. First is symbolism. The poet addresses snowdrop flower as the symbol of bravery or survival of the fittest, as this flower possesses an ability to bloom even in chilly winter. The poet says in this small drooping of flower erupts through the hard and thicker layer of the snow. यहाँ के सिंबल की तरह, ये ब्रेवरी के सिंबल की तरह इस्तेमाल किया गया है फ्लावर को, और बेसिकली यहाँ सिंबलिज्म का इस्तेमाल किया गया है। अगर हम चैप्टर में सिमिलीज की बात करते हैं, द पोएट हैज यूज्ड वेरियस सिमिलीज इन दिस पोम. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स साइटेड बाय द पोएट आर weasel and crow, which have been compared to things made by the bros because of their immobility. तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को कंपेयर किया गया है, ये सिमिलीज कहलाती हैं। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इसमें हमारे पास अगर आप देखोगे, स्नोड्रॉप फ्लावर जो है हैज़ बीन कंपेयर्ड टू द स्टार्स विच हैव बीन पोर्ट्रेड as a brutal by the poet in this poem. The poet says in the month of January, when winters are at its peak, stars are fierce, and in spite of the fact that a ton of animals die, and brutal stars help in the slaughtering of these animals. Similarly, snowdrop has been referred to as brutal, not because it helps the killing of someone, but because of its toughness that it possesses, basically. So third point में अगर सिमिलीज की बात करें, they had the head of the snowdrop flower has been compared to the metal dross of its heaviness. ये heaviness के साथ कंपेयर किया गया है। तो ये सिमिलीज यूज हुए हैं पोएम के अंदर। तो चलिए बात करते हैं अब मेटाफर के ऊपर। The snowdrop flower has been metaphorically compared to like globe because of its roundness. ये दो चीजें इस्तेमाल की है। एलिट्रेशन में अगर हम देखें, हैवी हेड इज द ओनली एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन इन दिस पोम, एज बोथ द वर्ड्स स्टार्ट विद द सेम इनिशियल कॉन्स्टेंट, क्योंकि दोनों वर्ड्स जो हैं सेम ही एलिट्रेशन से स्टार्ट होते हैं, चाहे हम हैवी की बात करें या हेड की बात करें। उसके बाद इमेजरीज जो यूज की गई हैं, पोएट हैज यूज्ड डिफरेंट इमेजरीज इन दिस पोएम लाइक विजुअल इमेजरी एंड काइनेस्टिक इमेजरी। सो दोनों पोएम में अगर विजुअल इमेजरी की बात करें, द पोएम इज फुल ऑफ विजुअल इमेज लाइक ग्लोब, वीजल, क्रो, माउस, स्नो, ये विजुअल इमेजरी में आती हैं जो दिखती हैं, स्नोड्रॉप, फ्लावर एंड स्टार्स। द कंडीशन ऑफ ऑल द क्रीचर्स कैन बी इजीली विजुअलाइज्ड थ्रू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोएट। उसके बाद जो काइनेस्थेटिक इमेजरी का यूज किया गया, मूविंग आउट द वीजल एंड क्रो, किलिंग ऑफ प्रे बाय प्रीडेटर्स, बेंडिंग डाउन ऑफ द फ्लावर आर एग्जांपल्स ऑफ काइनेस्थेटिक इमेजरी एज वेल इन दिस पार्ट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ऑर्गेनिक इमेजरी क्या यूज की है? मैंने आपको बताया था कि इमेजरी के बेसिकली 7 टाइप्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक इमेजरी इज यूज्ड इन टर्म्स ऑफ पेन विच इज कॉज्ड बाय द सीवियर विंटर. It's quite painful, pitiful to see the functioning of the mouse being reduced. The way brutal cold renders weasel crows and the animals immobile and is painful to see.
these animals are not in their right minds as they are on the verge of death. तो ये यूज किया गया है आर्गेनिक इमेज. उसके बाद enjambment का यूज किया है, मैंने आपको समझा दिया इससे पहली बार. ये पोएम में enjambment क्या होता है. The poetic devices is used throughout the poem is every line is associated with every other line. तो यहाँ पे हमेशा एक दूसरे लाइन के साथ कंबाइनेशन है, तो enjambment यूज किया है. फ्री वर्स पोएम है. Snowdrop is basically a free verse poem. As it does not have any rhyming scheme, क्योंकि इसमें कोई rhyming scheme नहीं है, तो ये फ्री जिसे हम कहेंगे ना कि वो एक फ्री वर्स पोएम है. Assonance. Following are the examples of assonance in the poem are round outer now and the mouse with the same vowel word ow. Head heavy death and end with the same vowel e. Crow mold and with the same vowel sound. Just like to pursue, move through and brutal with the same vowel sound u. Other and her with the same vowel sound free. Is it right now? Right mind tight with same vowel sound. If and n with the same vowel sound as well. So ये कुछ poetic devices use किए गए. Let's move to the textual questions. How has nature shrunk the globe? आंसर इसका होगा कि नेचर को कैसे shrunk किया गया है. The nature has shrunk the globe by restricting the movement of all the creatures with harsh and severe winter. Due to the freezing cold, these creatures like mouse, weasel and the crow have remained confined to their dwelling places, and they feel that the earth has become small and limited for them. So उसके बाद what has dulled of the mouse's heart? The severe winter has dulled the mouse's heart. Severe जो winter है उसी की वजह से जो mouse का heart है वो dull हो गया है. Which suffering do the animals undergo in the poem? इसमें कौन सी suffering, कौन सी तकलीफें animals उठाते हैं? The animals undergo many sufferings due to the severe winter in this poem. The terribly freezing cold has curtailed their movements. It has slowed down the heartbeat of the mouse, which is otherwise an active and lively creature. The plight of the weasel and the crow is also no different. They are frozen with the cold and nearly immobile as if molded in the brass. They are numb and dying with the cold. तो एनिमल्स की जो सफरिंग यूज की गई है, माउस की धड़कन तेज है, क्रो एंड मेजल को लाइफलेस कर दिया गया है, उनकी मूवमेंट्स को रिड्यूस कर दिया गया. तो ये सारी चीजें जो है एज सफरिंग ऑफ द एनिमल्स में इस्तेमाल की गई है. हर पेल हैड हेवी एज मेटल एक्सप्लेन. Here the poet refers to the snowdrop. Her pale head heavy as metal means that the snowdrop bears light colored or white flower and its head kept hanging down as it's heavy like a metal. क्योंकि इसकी heaviness की वजह से इसका जो head है वो बिल्कुल रुका हुआ है. Learning about literary devices, pick out the images from the poem. अगर poem में images देखें तो nature की जो images ली गई हैं वो है mouse, weasel, crow and snowdrop. Universe से globe, stars, outer darkness and deaths. Metal means the brass. Weasel and crow are the molded in brass. Explain the simile used by the poet. And in this verse, the poet compares the frozen stillness of the weasel and the crow with brass. ये frozen stillness को crow और with brass के साथ यूज किया गया है. It depicts that these creatures are so frozen that they cooled that they are nearly immobile, और इसकी वजह से वो बिल्कुल immobile है. Assonance in the repetition of the similar vowel sound in the syllable that are close together. Trace two lines in which ow sound is used. तो उसके लिए two lines जो हैं, round the mouse dulled wintering heart and move through an outer, यहाँ पे ow का use हुआ है darkness. Words with ow sound are mouse, round, throw and outer. Alliteration means the use of same letter or the sound at the beginning of the word that are close together. दो वर्डों को एक जगह इस्तेमाल करना और दोनों का कैपिटल लेटर स्टार्टिंग जो हो वो सेम हो. तो दिस इज मीनिंग दैट यहाँ पे राउंड द रग्ड रॉक्स, रैग्ड रास्कल रैन, तो ये सारी चीजें यूज हुई हैं. शी टेल्स, शी हेल्स ऑन द सी शोर, इस तरह से. नाउ इफ यू जस्ट टॉक अबाउट नेक्स्ट, pick out the examples of alliteration from the poem. They are wintering heart, weasel and crow. Her pale head, heavy, यहाँ पे देखो heavy और ये यूज किया गया है एक साथ में, और as metal. तो let's talk about one more concept and that is
some exam style based questions. Extract number 1 पूरी poem लिखी हुई है, तो let's talk about the extract taken from that poem, and this is the first one. If you just talk about the first one, so below are the summary of this point completed by writing the missing word and phrase. So सबसे पहले हम बात करते हैं snowdrop is a white flower plant, it gives be like dash dash. तो इसमें क्या आएगा, flowers. तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो दिस इज प्रीटी सिंपलर एंड ईजियर. यहाँ पे जो पहले में वर्ड जो आएगा हमारे पास, ओके आई एम यूजिंग द कलर, जस्ट अ सेकेंड. ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहला जो वर्ड है इसमें फ्लावर का यूज हुआ है, FLOWER, फ्लावर. इज इट राइट नाउ? दूसरे में a flower when cool winds, is it right now? When cool winds are blowing and the ground is, if you just talk about the ground is covered, COVERED, covered with, sometimes the plant push its stem through, is it right now? Stem through 8 inches, is it right now? 8 inches, बहुत नीचे से आ जाता है ऊपर. The snowdrop as a symbol of fear is winter. डैश 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 की अगर हम बात करें पैंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करें तो पैंट्स, ओके, पैंट्स द पोइट आर वेरी क्रूअल एंड यहाँ पे अगर हम बात करें द पेन्स, इज इट राइट नाउ? पेन्स द पोइट एज वेरी क्रूअल एंड हार्टलेस इन दिस सीजन. सो पेन्स इज दिस वन, नॉट पैंट्स. उसके बाद द पोइट आल्सो डिस्क्राइब्स वेरी ब्रीफली हाउ रिस्ट्रिक्ट्स द डैश डैश, द मूवमेंट of the creatures, movements of the creatures, is it right now? So यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट भी, तो यहाँ बहुत सिंपल है. यहाँ पे हमें बताया गया है कि there are certain expressions given below, choose one that best fits each expression on the table. तो mold in brass means the frozen stillness creatures. एंड अदर डेथ्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो दे आर सफरिंग ऑफ द एनिमल्स डिस्कस की गई है इस चीज से. तो दिस इज बेसिकली द सफरिंग ऑफ द एनिमल्स डिस्कस्ड हियर. सफरिंग ऑफ एनिमल्स इज बीइंग डिस्कस्ड, सफरिंग ऑफ एनिमल्स आएगा इसमें. एंड आपकी टेक्स्ट बुक पे भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा. दूसरी डल्ड वेंटरिंग हार्ट का मतलब है रिड्यूस द फंक्शनिंग ऑफ द हाउस ऑफ माउसेस हार्ट. इसका मतलब है रिड्यूस the functioning of mouse's heart, तो ये आप देखोगे mouse's heart. उसके बाद she too pursues her end. Nature knows how to achieve her goals. Is it right now? So यहाँ पे इसका मतलब आएगा nature knows how to achieve the goals. Nature knows how to achieve the goals. Knows how to achieve the goals. Now यहाँ पे नेक्स्ट पैरा है जो हमारे पास, वो है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस. दीज आर द 4 लाइंस जो आपके एक्सट्रैक्ट में से ली गई हैं. तो इसके जो क्वेश्चंस इसके ऊपर हैं, व्हाट हैज श्रंक द ग्लोब एंड हाउ, नेचर हैज श्रंक द ग्लोब टाइट विद द बिटर कूल्ड. उसके बाद है व्हाट सफरिंग डू द एनिमल्स अंडरगो इन द पोएम, एनिमल्स फील वेरी डल इन विंटर, ऑल देयर सपोर्टिवनेस कम्स टू एन एंड, they find place of shelter, they see death all around them, in fear they lose all their mobility. उसके बाद थर्ड है what do the following words mean, shrunk means become smaller, dulled means made slow or less, one more extract and the question is based on that extract as well. What are not in their right minds, who are not in their minds, the animals are, the creatures are not in their right minds in the freezing cold. उसके बाद है identify 2 poetic devices in the line, the poetic devices personification and the simile have been used in the lines. उसके बाद है brutal and pursuous, इसकी आपको examples बतानी है. violent and cruel,
इज इट राइट, यानी कि मीनिंग अगर बताएं तो ब्रूटल मीन्स वायलेंट एंड क्रूअल, और परस्यूज मीन्स कंटिन्यूज टू अचीव। सो यहाँ पे आज का लेसन हमारा खत्म होता है। स्नोड्रॉप पोएम नंबर 5, इंग्लिश क्लास 10, टुलिप सीरीज बाय ताहिर सर। सो प्लीज डू वॉच दिस and do subscribe our channel and do watch all the playlists for the previous uploaded questions, and you will find the things very easier for your examination. Thank you. Up till we are meeting in the next session. Till then, take care and God bless you.